Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, students. So we were done up to here. So the topic that we are going to start today is the transfer of charges. Okay. So in the previous lecture we have discussed about the charges, their nature, the positive and the negative charges. Then we have studied about that the like charges they repel and the unlike charges they attract each other. Now we are going to study about the transfer of charges, whether the transfer of charges is happens or not. Okay, so for that we are going to perform an activity, and that is we have to take an empty jam bottle just like this, then take a piece of cardboard, okay, slightly bigger in size than the mouth of the bottle. Then this is the mouth of the bottle, and we have to take the piece of a cardboard that should be slightly bigger in size. Okay, then we have to pierce a hole in it such so that a metallic पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड. ओके, मतलब ऐसा हो, इतना होल करना है कि एक मेटालिक स्ट्रिप जो है क्लिप, पेपर क्लिप जो है वो इंसर्ट इसमें हो सके. ओपन आउट द पेपर क्लिप वी हैव टू ओपन दिस आउट just like this. We have to open it, then cut 2 strings of aluminum foil. Then we have to cut 2 strings of aluminum foil about 4 centimeter into 1 centimeter each. The dimensions should be like them. Then we have to hang them on the paper clip just like this. We have to hang them on the paper clip. Okay, now what we are going to do, we are going to insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to this. See, the cardboard is like this in the horizontal, and in the perpendicular means अगर ये horizontal है तो इसको vertical होना पड़ेगा, right? Charge a refill. Then we have to charge a refill and touch it with the end of the paper clip. Okay, इसको charge करके we are supposed to let it touch it. Observe what happens. Now we have to observe what is happening. Is there any effect on the foil strips? Are they repelling? Are they attracting? Now touch other charged bodies with the end of the paper clip. Do foil strips behave in the same way in all the cases? Okay, so can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strips repel each other? See, the aluminium foil strips receive the same charge from the charge refill. Okay, that is they're receiving the same charge. Okay, so the strips carrying same, they will repel. That is why they were repelling, because the charge that was having in that, the refill has the same charge. Okay, that is why that was repelling that, and they become wide open. Okay, because repelling से वो दूर हो जाएगा, that means that will open. So such a device can be used to detect whether an object is carrying a charge or not. So we can use such a device to check whether there is charge present or not, and such a device is known as an electroscope. So that means electroscope is such a device which can be used to check whether the object is having a charge or not. Thus we find that electric charge can be transferred because we saw it, right? The charge that was present there, we saw that was being transferred from the charged object to another charged object through a metal conductor. There should be a conductor in between. If there will be an insulator, so charge karega hi nahi, because insulator doesn't allow the flow of charge. Okay, now touch the end of the paper clip gently with hand, and you will find a change in the foil strip. They come back to the original state. Repeat charging of foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip. So what is it happening? The reason is that the foil strips is losing charge to the earth through your body. We see the foil strips are discharged. That is discharging now. That means the charge उसके पास जो था वो कम हो रहा है. That is discharging. So the process of transferring charge from a charged object to the earth is called earthing. So what is earthing? Earthing is a process through which a charged body को हम discharge करते हैं to the earth. It is also known as grounding. इसको earthing भी बोलते हैं, grounding भी बोलते हैं. हम अपने घर को भी earthing करते हैं, right? So earthing is provided in buildings to protect us from electric shock. Just like I said, due to any leakage. हम अपने जो घर होते हैं उनको earthing करते हैं, ground कर बोलते हैं. इस घर को ground किया हुआ है. That is because जो इलेक्ट्रिक शॉक कभी इलेक्ट्रिक करंट के लीकेज से होगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से कोई भी मतलब एक्सेसिव करंट आएगी तो दैट विल सीधा वो ग्राउंड हो जाएगी, राइट? सो इससे हम प्रोटेक्ट होते हैं. नाउ द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. अभी तो हमने ये पढ़ा, अब लाइटनिंग की क्या कहानी है. इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन द लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय द रबिंग. अभी तो हम रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस होता है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडर स्टॉर्म, द एयर, जब थंडर स्टॉर्म का डेवलपमेंट होता है, जो एयर करंट्स होती हैं दे मूव अपवर्ड्स, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं दे मूव डाउनवर्ड्स. ऐसा होता है.
These vigorous movements cause separation. Now the charge is being separated, right? एक साइड एक चार्ज और दूसरी साइड चार्ज में सेपरेशन आ रहा है. By a process not yet completely understood, the positive charge जो होता है वो कलेक्ट होता है नियर द अपर एजेस. जैसे यहाँ पे क्लाउड है, ओके, जो थंडरस्टॉर्म है जो पॉजिटिव है दैट इज वो ऊपर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आ रहा है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दैट? सो देयर विल बी अकोमुलेशन ऑफ द चार्जेस. ओके, चार्जेस जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स. अब कैसा हो सकता है? जो डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्चार्ज हो रहा है, दैट कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ. और दैट कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेम क्लाउड. मतलब एक ही क्लाउड के अंदर भी होता है ये. टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक द एंशिएंट पीपल डिड, बिकॉज वी नो अबाउट इट, सो वी डोंट गेट फ्राइटेंड सो मच लाइक द एंशिएंट पीपल. जो पहले लोग थे, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग कि ये हो क्यों रहा है, सो दे गेट फ्राइटेंड मच मोर देन अस, राइट? Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve our understanding how a lightning strike could destroy life and property, right? So it is therefore necessary to take measures to protect ourselves. So lightning safety जो है, hearing thunder is an alert to rush to a safer place. पहले होता है ना, पहले एक थंडर जैसे हमें इट इज हमेशा ऐसा है कि हमें कहीं दूसरी जगह पे कहीं जाना है. ओके, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम. हमें रुकना है, कमिंग हम किसी सेफ जगह पे हमें रुकना है कि अभी थंडर जब रुक जाए तब हमें वहां से बाहर आना होता है. फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. आ हाउस और building is a safe place. If you are traveling by a car or a bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. Okay. Now do's and don'ts during a thunderstorm outside the house. If you are outside your house, open vehicles, okay, they are not safe. Open fields are not safe. The tall trees, the tall buildings, the tall shelter, they are not safe. Okay. When the magnitude of kilometer charge becomes very large, the air which is normally a poor conductor of electricity is, अभी क्या होता है जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सो द एयर विच इज नॉर्मली अ बैड अ पुअर कंडक्टर सम टाइम कैन बी इंसुलेटर अ टाइप ऑफ, ओके, इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो. पहले तो वो फ्लो को रोकती है, बट जब वो चार्ज इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए जो, तो फिर जो एयर भी है दैट इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट, मतलब रोक नहीं पाएगी उस फ्लो को. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट होते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. फिर वो बड़ी आवाजें एंड द साउंड्स एंड द लाइट्स वो हो जाता है. सो वी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग. द प्रोसेस इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. द चार्ज इज बीइंग डिस्चार्ज देयर. सो कैरिंग अम्ब्रेला इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, बिकॉज उसमें जो आयरन रॉड होता है दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कंडक्टर, और वहां से चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो सकता है. बिकॉज अभी चार्ज क्लाउड से आता है तो दैट इज फाइंडिंग अ कंडक्टर जहां से जिसके थ्रू वो चार्ज को डिस्चार्ज करके ग्राउंड कर दे, अर्थ कर दे. तो अगर हम अम्ब्रेला ले रहे हैं तो उसका जो वो है द आयरन जो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? सो उस वक्त क्या हो जाएगा, तो वो डिस्चार्ज उसके थ्रू जाएगा, तो हमारे लिए वो दैट इज नॉट सेफ फॉर. सो फिर ना फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज. If no shelter is available and you are in an open field, stay away from the tall trees, stay away from the poles or the metal objects. क्योंकि मैंने कहा good conductor है. Do not lie on the ground. Instead, squat low on the ground. Place your hands on your knees with your hands just like in position. इस position में रहना है. This position will make you the smallest target to be struck. Okay. So I hope that's all for today.